Micromic Saima Best Fight Choreographer Kannada goes to Ravi Verma for Mr. and Mrs. Ramachari. এই রবি ভার্মা তার কিছু ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম, তার কিছু ইনফরমেশন নিয়ে আসলাম আপনাদেরকে দিতে। এই রবি ভার্মা, তো আমি আপনাদেরকে বলবো অসাধারণ একজন ডিরেক্টর। আমি যা যাচাই করে দেখলাম অসাধারণ একজন ডিরেক্টর। উনি সাউথ ইন্ডিয়ান অনেকগুলো কাজ করেছে। সাউথ ইন্ডিয়ান তেলুগু মালায়ান হয়ে থাকে, এমনি কানাডার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ফাইট ডিরেক্টর হলো রবি ভার্মা। রবি ভার্মা এই কেজিএফ চেতনায় ইয়াসের মুভিতে ফাইট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছে। ইয়াসের মুভি ব্রহ্মাস্ত্র বলে একটা মুভি ছিল, সেই মুভিতে ফাইট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছে হলো এই রবি ভার্মা। এই রবি ভার্মা আরো কাজ করেছে হলো এই ইন্ডাস্ট্রির আরো একজন জনপ্রিয় নায়ক রাজকুমার, ওনার মুভিতেও এই রবি ভার্মা ফাইট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছে। উনি বলিউডও ফাইট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছে, সালমান খানের মুভিতে কাজ করেছে, যেমন জয় হয়ে বলে একটা মুভি আছে, সেই মুভিতেও ফাইট মাস্টার হিসেবে কাজ করেছে এই রবিবার। রবিবার হয়তো জনপ্রিয় একজন ফাইট ডিরেক্টর, ওনার ফাইট গুলো অত্যন্ত ভালো হয়ে থাকে, ওনার অ্যাকশন গুলো দুর্দান্ত হয়। এক কথায় অসাধারণ। আমি যা যাচাই করে দেখলাম, আমি যা আপনার পুষ দিয়ে দেখলাম, এক কথায় অসাধারণ। এই ফাইট ডিরেক্টর রবিবার ভাই কিছু ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম, তাকে চেনাতে। এই মাত্র একজন অ্যাকশন ডিরেক্টর রবিবার, কথায় অসাধারণ। তো সেরকম আমার কিছু ভিডিও আপনাদেরকে দেখাই। এই রবি ভার্মা, চলুন শুরু করা যায় রবি ভার্মার ক্ষেত্রে ভিডিও। তারপর বাকি কথা বলবো, আরো কিছু কথা, আরো কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করবো। Micromic Saima Best Fight Choreographer Kannada goes to Ravi Verma for Mr. and Mrs. Ramachari. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನನ್ನ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೈಮಾ. ಮತ್ತು ರಾಮಾಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಯಶ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಂಟ್ ಹುಡುಗರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Ravi Verma wraps up Salman Khan's Jai Ho. Sandalwood's famous stunt choreographer Ravi Verma, who has become the most wanted stunt director in Bollywood, has wrapped up the shooting of Jai Ho. The stunt choreographer was busy with the movie, which has Bollywood superstar Salman Khan, Tabu and Daisy Shah in the lead roles. Ravi Verma has confirmed the news on the microblogging site Twitter. He tweeted, "Wrapped up with Jai Ho, travel towards Sweden." He had also posted a picture of him with director Sohail Khan. Jai Ho is the remake of the Tollywood hit Stalin, which featured mega star Chiranjeevi and Trisha Krishnan in the lead roles. It was directed by South Ace director A.R. Murugadoss. Earlier, the crew had started shooting the film with the working title as Mental. Later, they renamed the movie as ಒಳಗಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ವೈಬ್ಸೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್. ಸರ್, ಇದು ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇದೊಂದು ವಾಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ವಾಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಫೋಟೋನೇ ಆಟೋ ಓಡಿಸೋದಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ನೀವು ವೇಟ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 93, 94 ಇರಬೇಕು ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ದು. ತಿರ್ಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಫೈಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಶಬ್ದವೇದಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಂಟರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ. ತಿರ್ಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿರೋದು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಒಡನಾಟಗಳಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ವಾಲಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಇರೋಂಥವ್ರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಲ್ಗಳೇ ಸಾಲಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸಾಂಗ್ಲಿಯನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಲ್ದಿರ ತೊಗೊಂಡೋಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಇದು ನನ್ನ ಲೈಫಿನ ಜರ್ನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ভিডিওটা দেখলাম, আপনাদেরকে দেখালাম। তো আপনাদের কাছে কেমন লাগে সেই রবি বর্মা ভাই ডিরেক্টর? আপনারাও চাইলে যাচাই করে দেখতে পারেন এই রবি বর্মা সম্পর্কে। উনি অসাধারণ একজন ডিরেক্টর, আমার এক কথা অসাধারণ ভালো লেগেছে। উনি অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন, রিসেন্ট কাজ করেছে কলকাতায়, তো উনি কাজ করেছে জিতের রাবণ ছবিটা দেখবেন। জিতের রাবণ ছবি 5 ডে কিন্তু রবি বর্মা ছিল, ঠিক আছে। উনি অসাধারণ একজন ফাইট ডিরেক্টর, বলবো এক কথায় অসাধারণ। উনি বড় বড় নামের সাথে যুক্ত সবসময় রয়েছে। উনি অনেক ভালো একজন ফাইট ডিরেক্টর। আমি মনে করি উনি যদি বরবাদ সিনেমায় ফাইট ডিরেক্টর হিসেবে থাকে তাহলে এক কথায় থাকিয়ে দেখে ফাইট হবে দুর্দান্ত। তো আমি চাই রবি বর্মা থাকুক, অনেক ভালো একটা ফিল্ম হোক বরবাদ, সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ হোক। কারণ আমাদের বাইরে শাকিব খান সম্মান এখন যে কাজগুলো করেছে তার থেকে পরের সিনেমাটা আরো বেটার করার চেষ্টা করে থাকে শাকিব খান, আমাদের শাকিব খান। তো এটাই বলবো এক কথায়, অসাধারণ একজন ডিরেক্টর আসতেছে। আশা করবো অনেক ভালো ফিল্ম থাকবে, সবাইকে মুগ্ধ করে দেবে। অবশ্যই মজার শেষে কোনো পাশে থাকবেন, একটা সাপোর্ট করবেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আর আমার ভিডিওটা খুব ভালো লেগে থাকে আর আমার কথাগুলো যদি আপনারা একমত হবেন অবশ্যই কমেন্ট করতে জানিয়ে দিন। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। খুদা হাফেজ।